Hello everyone, स्वागत करुछि आज रे क्लास को. So in this class we are going to discuss about from question from macroeconomics which will come in CPET exam. So let's begin the class. So the first question is, in a two sector circular flow of income model, what is withdrawal or leakage? Two sector circular flow model रे कोटा लीकेज. तो आमर सर्कुलर फ्लो मॉडल रे गोटे लीकेज थाए आ गोटे इंजेक्शन थाए. लीकेज एंड इंजेक्शन. इंजेक्शन कौन करे, द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो इनकम को बढ़े दिए, इनकम रो फ्लो को बढ़े दब. आ विड्रॉल कौन करे, लीकेज कौन करे, तार साइज को कम कर दिए. द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, द साइज ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कम कर दिए. तो ये क्वेश्चन जी टू सेक्टर मॉडल रे जो गोटे हाउस होल्ड सेक्टर आ गोटे आमर फार्म सेक्टर, दुईटी सेक्टर जो थाए से विड्रॉल कोटा विच इज विड्रॉल इन टू सेक्टर मॉडल. तो एक्सपोर्ट तो नहीं, एक्सपोर्ट फोर सेक्टर मॉडल रे अच्छी. सेमती इन्वेस्टमेंट हो इंजेक्शन. सो सेविंग इज द राइट आंसर. दैट इज लीकेज और विड्रॉल इन टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल. सेविंग कौन करता है, लोक मान कंजम्पशन को कम कर दिले. कंजम्पशन कमी गले कौन हम, डिमांड कमी जीवो, डिमांड कमिले प्रोडक्शन कमी जीवो, प्रोडक्शन कमिले इनकम कमी जीवो. तो सेविंगटा गोटे टाइप रो लीकेज हिसाब रे काम करि थाए इन केस ऑफ टू सेक्टर मॉडल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंजेक्शन इन फोर सेक्टोरल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? फोर सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रे कोटा होजी इंजेक्शन. इंजेक्शन माने कौन, जोटा इनकम बढ़े दिए. तो ये इंजेक्शन कोटा हम फोर सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल रे एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट हो इंजेक्शन. एक्सपोर्ट कौन करे, आम देशर फॉरेन करेन्सी को बढ़े दिए. करेन्सी बढ़े मनी सप्लाय बढ़ी जीवो, मनी सप्लाय बढ़ले डिमांड बढ़िबो, डिमांड बढ़ले प्रोडक्शन बढ़िबो. सो एक्सपोर्टा गोटे टाइप रो इंजेक्शन हिसाब रे काम करि थाए इन केस ऑफ फोर सेक्टर मॉडल. एंड इन दिस मॉडल इंपोर्ट इज विड्रॉल और लीकेज. इंपोर्ट गोटे हिसाब रे हमर लीकेज हिसाब रे काम करि थाए फोर सेक्टर मॉडल रे. सो आंसर विल बी एक्सपोर्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एडेड टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू गेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे कौन ऐड कले आम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पाई थाउ? डेप्रिसिएशन कॉस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज. सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होची हम देश भितर, देशर बाउंड्री भितर जिते भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हो तार मनी वैल्यू. आ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होची जोटी भी थांती आम देशीय माने जोटी भी प्रोडक्शन करछंती, माने बाहर भी किसी प्रोडक्शन होची तो सेटा को मिसे दिले ही जीवो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो एठी एनएफआईए को ऐड करा जाए. तो जदि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनएफआईए जदि मिसी गला देन इट विल बिकम gross national product. So the answer will be net factor income from abroad. Then fourth question is, gross domestic product at market price is 6,000. Factor income earned by nationals is 600 and factor income earned by foreigners is 800. Depreciation cost is 400. Net indirect tax is minus 200. What is gross national product at factor cost? तो ये देइछि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस देइछि. हमको दरकार कौन अच्छी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक डिफरेंस रहा डोमेस्टिक रु नेशनल. तो डोमेस्टिक रु नेशनल पई एनएफआईए को ऐड करा हबो प्लस एटी कौन मार्केट प्राइस रू आम फैक्टर कॉस्ट जीवार अच्छी. सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हम ताहले आमको मिल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सो जीडीपी हो 6,000. एनएफआईए प्लस हम. सो एनएफआईए केते हम, फैक्टर इनकम अर्न बाय नेशनल इज 600 माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इज 800. सो यहाँ होगला माइनस 200. तो ये माइनस 200 प्लस है
सेमती कही नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हम तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स देछि -200 नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज -200 सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जेतु माइनस होछि -200 सो इटा हे गला 6000 -200 plus 200 so answer will be 6000 will be net national product at factor cost so answer will be C that is net gross national product at factor cost. Okay, next question. What is deducted from personal income to get disposable income? पर्सनल इनकम को कौन डिडक्ट कले कौन काटले आमे डिस्पोजेबल इनकम पाइबा सो पर्सनल इनकम रू कौन काटले सब्सिडीज अच्छी इनडायरेक्ट टैक्सेस अच्छी डायरेक्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट सो द आंसर विल बी डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स जदि कटा हुए पर्सनल इनकम रू विल गेट डिस्पोजेबल इनकम. Increase in consumption per unit of increase in income is dash marginal propensity to consume, average propensity to consume, autonomous consumption, none of this. So increase in consumption per unit of increase in income, so this is delta C by delta Y. The change in consumption is divided by change in income. This is marginal propensity to consume, so A will be the right answer. Marginal propensity to consume गोटे इनकम जदि गोटे यूनिट जदि इनकम बढ़ुची हमर कंजम्पशन केते बढ़िबो दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एमपीसी ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू 10 + 3y गोटे कंजम्पशन फंक्शन देछि व्हाट इज एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम माने होची कंजम्पशन फंक्शन रा स्लोप. सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस फंक्शन दिस इज स्लोप जदि यार डेरिवेटिव कर देवा डेल्टा C with respect to delta Y so the answer will be 3. So 3 is the marginal propensity to consume, so B is the right answer, that is 3. In case of linear consumption function what will be APC is greater than MPC, APC is less than MPC, APC is equal to MPC, all of this. In case of linear consumption function माने होची जेते बेले द कंजम्पशन फंक्शन दा गोटे स्ट्रेट लाइन हबो. ओके दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन C is equal to A plus BY तो एटा होची गोटे लिनियर कंजम्पशन फंक्शन. तो ई केस रे कोन हबो MPC बेसी हबो ना कम हबो कोन देछि तो एठी एठू जदि हमें ई पॉइंट को जदि जोड़ी दबा एटा गोटे पॉइंट A B C जोड़ी देले ए एंगल एटा होची हमर APC दिस इज APC आउ ए एंगल को लंबाई देले ए जगह रे एटा होची MPC दिस इज MPC. तो सेमती एटा जदि करबा एटा सब हमरो मिलबो APC. तो MPC टा गोटे कांस्टेंट अछि आ ए एंगल टा सब बेले अधिक हबो सो द आंसर विल बी APC will be more than MPC. Average propensity to consume will be more than marginal propensity to consume. ए कंजम्पशन फंक्शन रा स्लोप होची MPC ए एंगल ना दे देला सपोज 1 एंगल 1 होची MPC आ जो ए एंगल माने जोटा करिवो ए सब एंगल कोन हबो एठी समान हबो सॉरी एक बड़ हबो का ठारू एक नंबर एंगल ठारू सब एंगल एठी बड़ हबो. ओके so this is the right answer, APC will be more than MPC. Next question, the consumption function and investment function are given as C is equal to 120 plus 0.80y and I is equal to I is investment is equal to 250. What will be the equilibrium level of income? So equilibrium रे कोन होय थाए
y इज इक्वल टू c प्लस i इनकम सब बेले कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट सहित समान होता है सो y इज इक्वल टू c है 120 प्लस 0.80 y प्लस 250 आई देछि 250 तो 0.80 y को एपटे नहीं गले तो यहाँ हो गला 0.80 y इज इक्वल टू 120 प्लस 350 250 हो गला 370 यहाँ है 0.20 y इज इक्वल टू 370 y इज इक्वल टू हो 370 बाय 0.20 तो या सॉल्व कले या सॉल्व कले तो हो 1850 so the answer will be 1850 so this is the equilibrium level of income. Next question, what is the value of multiplier when marginal propensity to consume is 0.75? So multiplier formula कौन m is equal to 1 by 1 minus MPC. This is the formula for multiplier. So it multiplier value यदि बाहर करिबा 1 minus 0.75 so is equal to 1 by 0.25 so it 100 by 25 हो गला so answer will be 4 so multiplier value is 4 MPC देछि 0.75 so the multiplier will be 4. Next question, when increase in investment is 700 crores and MPC is 0.5 the increase in income will be. So our multiplier कौन कहूँ delta y is equal to m into delta I तो ये change in investment देछि केते 700 देछि MPC देछि 0.5 so multiplier केते ही जीवो 1 by 1 minus 0.5 so is equal to 1 by 0.5 so 10 by 5 is equal to हो गला 2 so multiplier हो गला 2 तो 700 यदि 2 multiply कर दवा ताले आंसर केते आसीबो 1400 so 1400 crores will be the increase in income so this is the right answer 1400. The relative income hypothesis was given by doesn't vary so doesn't vary is the right answer. Keynes देइछन्ति absolute income hypothesis and Friedman देइछन्ति permanent income hypothesis और मोदी गिलानी देइछन्ति life cycle hypothesis. Next question, when income increases consumption increases, when income decreases consumption decreases but not to that extent. जिते बेले इनकम बढ़ी जाए कंजम्पशन भी बहुत बढ़े किंतु इनकम जिते बेले कमुची कंजम्पशन सही लेवल रे कमु नाही जो लेवल रे इंक्रीज हेतिला दिस इज रैचेट इफेक्ट सही हमर आसी जे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस रे आसी जे रैचेट इफेक्ट तो रैचेट इफेक्ट कोन कहूची जिते बेले इनकम कमुची कंजम्पशन कमिवो किंतु इनकम हिसाब रे कंजम्पशन कमिवो नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन, investment can be undertaken when interest rate is more than marginal efficiency of capital, interest rate is less than marginal efficiency of capital, interest rate is equal to marginal efficiency of capital, both B and C. So marginal efficiency of capital is the internal rate of return गोटे investment आमे केते return पाउछि that is marginal efficiency of capital. तो जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक हेले ताहले जे लाभ हम द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठारू जदि रिटर्न जदि अधिक है से गोटे फार्म को प्रॉफिट हम एटलिस्ट सो द आंसर विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन हेले भी से इन्वेस्टमेंट करिवो इक्वल टू हेले भी से इन्वेस्टमेंट करिवो सो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मस्ट बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट और एटलिस्ट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल is equal to interest rate. So the answer will be D, both B and C. Next question, 15. Money is what money does. This definition was given by definition किए देथिले मिल्टर फ्राइडमैन, क्राउदर, फिशर, वाकर.
सो द आंसर इज वर्कर। वर्कर ए डेफिनेशन देथिले मनी जहा करे ता होची मनी माने तार फंक्शनल डेफिनेशन आम कहि परबा तार फंक्शन को नै डेफिनेशन से देई छंती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 rupee coin was issued by 1 rupee coin are issued by कहा द्वारा इश्यू करा जाता 1 rupee coin दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई करे नाही आरबीआई कौन करि थाए 2 टंकार ऊपर जहाँ भी सब अच्छे सब आरबीआई प्रिंट करि थाए किंतु 1 टंकार तले जहाँ अच्छी सब करि थाए हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री। which is an element of high powered money ro कोटा element cash reserve of the commercial banks, currency held by the public, deposits of the commercial banks, both A and B. So the answer will be both A and B. High powered money is equal to C plus R, that is cash currency held by the public and cash reserve of the commercial banks. So the answer will be A and B. When reserve ratio is 0.25, the total cash reserve is 200 crores. What will be the total credit creation? यदि cash reserve 200 अच्छी बैंक पाखरे और reserve ratio देछि 0.25 तो हमर क्रेडिट मल्टीप्लायर फॉर्मूला होचे 1 by R. So 1 by 0.25 so is equal to हे गला 100 by 25 so 4 तो क्रेडिट मल्टीप्लायर है 4 सो कैश रिजर्व इंटू क्रेडिट मल्टीप्लायर कले आमर टोटाल क्रेडिट क्रिएशन मिलता है सो 200 इंटू 4 इज इक्वल टू 800 हम क्रेडिट क्रिएशन कारण 4 है मल्टीप्लायर और कैश रिजर्व हो 200 सो क्रेडिट क्रिएशन हम 800 crores. So the answer will be C. Next question, dash measure of money supply by RBI consists of currency, demand deposits with commercial bank and time deposit. ये तीनोटी जिनस को नहीं कोटा ही था माने करेंसी C प्लस डिमांड डिपोजिट D प्लस टाइम डिपोजिट तो ये कोटा हम दिस इज M3 करेंसी डिमांड डिपोजिट प्लस टाइम डिपोजिट M1 टा होची C प्लस D, M2 टा होची C प्लस D प्लस पोस्टल सेविंग और M3 है C प्लस D प्लस टाइम डिपोजिट, M4 होची सब जिनस को मिसे देले D प्लस पोस्टल सेविंग प्लस टाइम डिपोजिट सब जिनस को मिसे देले हो जाए M4 तो M3 होची करेंसी प्लस डिमांड डिपोजिट प्लस टाइम डिपोजिट और फिक्स्ड डिपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज ए लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी तार अर्थ गोटे लिमिटेड डिनोमिनेशन पर्यंत जार पेमेंट करा जाई पारे दैट इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। सो 10 rupees is not legal tender money, limited legal tender. 5 rupees is also on limited legal tender. 20 rupees note also on limited legal tender. So the answer will be none of this. आमर 25 rupees है 25 पैसा 25 पैसा 50 पैसा 10 पैसा ये सब हो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी जोटा गोटे लिमिटेड डिनोमिनेशन पर्यंत आम पेमेंट करें आइदर 10 टंका पर्यंत 100 टंका पर्यंत एमती गोटे लिमिटेड गोटे लिमिट अच्छी। Okay, so these are the questions from macroeconomics. I hope this discussion class might be helpful for you for your CPET preparation. So if the class is helpful then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.